सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और आज देखें द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेट नंबर 42। फ्रेंड्स, इसके पूर्व मैंने अपने वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम में लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस को आपके सामने लाया हूं और आज इसी कड़ी में आज देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके पूर्व के वीडियो में मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण और एक्सक्रीशन में भाग लेने वाले अंगों के बारे में भी आपको बताया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं, आखिर हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी इज द मेन फिल्टर ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच फिल्ट्रेट्स द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। So urine formation is the chief function of the kidney. As we know, excretion is the process of removal of the toxic waste from the body of an organism. Friends, जैसा कि हम जानते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया में हमारे शरीर में बने हुए विभिन्न हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट का निष्कासन होता है। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। और हमारे शरीर में जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हमारी कोशिकाओं में सेलुलर ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप होता है और मूल रूप से इनका निष्कासन एक्सपायरेशन के द्वारा होता है। लेकिन यूरिया का निर्माण लीवर में होता है और यह किडनी के द्वारा हमारे शरीर से एलिमिनेट किए जाते हैं। आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि हाउ द यूरिया इज रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी एंड व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नाउ इट इज नेसेसरी टू रिमूव दिस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज देयर एक्यूमुलेशन इज पॉइजनस एंड हार्म अस। चूँकि इन वेस्ट प्रोडक्ट का हमारे शरीर में जमाव हानिकारक होता है, जहरीला होता है और यह हमारे शरीर को हार्म कर सकते हैं, इसलिए इनका शरीर के बाहर निष्कासन होता है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स व्हिच रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। दीज आर लंग्स एंड किडनीज। लंग्स और किडनी इसमें अर्थात क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया के निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड किडनी एक्सक्रीट यूरिया। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में विस्तार से बात करेंगे। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 अंग भाग लेते हैं। एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ा यूरेटर जो कि किडनी से निकलती है, किडनी के रेनल पेल्विस भाग से, और एक यूरिनरी ब्लैडर जो बाहर की ओर यूरेथ्रा के द्वारा खुलता है। फ्रेंड्स, ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ हम संपूर्ण ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के चित्र को देख पा रहे हैं। यहाँ 2 बीन सेपेड किडनी है, इसके ऊपर एक रचना होती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस किया था। और इस किडनी से आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रत्येक किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी यूरेटर निकलती है जो क्रमशः एक आशय में खुलती है। इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और यह यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू शरीर के बाहर यूरिन को एक्सपेल्ड कर देती है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किडनी it is the main organ of the excretory system and it is located on the other side of the spine. Now the second is the ureter. One from each kidney opens into the urinary bladder. Ureters are the tubes which carry urine from the kidney to the bladder. इसके बारे में भी आपको MCQ टाइप क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्रत्येक किडनी से एक यूरेटर निकलती है और दोनों किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स
यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। द यूरिनरी ब्लैडर is a hollow muscular organ that stores the urine until it eliminated from the body. और यह यूरिन का तब तक स्टोर करती है जब तक यह शरीर के बाहर नहीं निकाल दिया जाता। इट इज लोकेटेड इन द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द पेल्विस, which is the lower part of the abdomen just above the pubic bone. यह हमारे शरीर में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्थित होता है। द ब्लैडर इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन ऑफ द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बिटवीन द प्यूबिक बोन्स, और यह प्यूबिक बोन्स के बीच में स्थित होती है हाइड्रोग्रास्टिक रीजन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Other structures such as the uterus in the females, rectum and prostate gland in males also located in the hypogastric region of the pelvis. और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का चौथा भाग है यूरेथ्रा, a tube-like urethra which is connected with the bladder, and urine is passed from the body through it. A pair of kidney. It is the main organ of the excretory system. Now I am going to discuss the part of the excretory system brief. A pair of kidney. It is the main organ of the excretory system and is located on the other side of the spine. They are the kidney-shaped bean. They are kidney-shaped bean structure. They are bean-shaped structure that have an inner convex side. It is made up of very small functional unit nephrons. It is also VVI questions. The kidney is made up of nephrons, and about the nephrons we know that nephron is the structure and functional unit of kidney. Each kidney is made up of about 1 million of nephrons. This is very minute structure. Now the blood goes into the kidney with the help of the renal arteries and leaves through the renal veins. Internal structure. The outer layer of the kidney is called a capsule, and the kidney contains two zones, that is the outer zones, which is known as the cortex, and in the inner zone, which is known as the medulla. And about the cortex and medulla we have discussed in the adrenal gland of the endocrine system, और जिसके बारे में मैंने बताया था कि किडनी के दोनों भाग कॉर्टेक्स और मेडुला से विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन, मिनरलोकार्टिक पार्ट्स, ग्लूकोकार्टिक पार्ट्स और एंड्रोजन, जबकि इसके मेडुला रीजन से 2 हार्मोन्स एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन स्रावित होता है। इसके फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था, और मैंने बताया था डिटेल में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इनर ग्लैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम चर्चा न करेंगे, यहाँ संदर्भ बस मैंने इसकी चर्चा की। और नेक्स्ट है द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, that is the renal pyramids. The cortex extends in between the medullary pyramids as the renal columns called columns of Bertini. It is also very important topic for your MCQ type of questions on the excretory system. Now, here is the anatomy of the kidney, and as we see that there are 2 bean-shaped structure, and at the peak or the top there are 2 yellow colored structure. Adrenal gland is found, and so many structures of the kidney is discussed here, and we also see that from each kidney ureter arises, and as I have discussed, the ureter joins the urinary bladder, and urinary bladder opens outside the body through the urethra. Now, about the nephrons. Each kidney is made up of very small functional and basic units called nephrons, and nephrons are also known as uriniferous tubules. So, nephrons is the structure and functional basic unit.
Now, each kidney has as many as 1 million nephron in each human kidney. Nephron is the primary unit of homeostasis in the body. The nephron is a long tubule. Every nephron consists of two parts, the glomerulus and the renal tubule. A glomerulus, as I have discussed here, the structure of glomerulus together with the Bowman's capsule. Bowman's capsule is the cup-shaped structure in which glomerulus is located, and both structure together is known as Malpighian body or the renal corpuscle. Now, the glomerulus is a network of the tiny blood vessels located within the Bowman capsule, and the tiny blood vessels are efferent and afferent arteriole. Now, Bowman's capsule is a part of the nephron, a double-walled cup-like structure that encloses the glomerulus. Glomerulus, along with the Bowman's capsule, is called Malpighian body or Malpighian corpuscles or renal corpuscles. These are two names of the Malpighian body. That is, the Malpighian body is also known as Malpighian corpuscles or the renal corpuscles. Now, the outer layer of Bowman capsule is lined by the squamous epithelium, while the inner layer of the Bowman capsule consists of a special type of cells known as porocytes, P cells with filtration slits. And porocyte cell is also important in the Bowman capsule as well as in the excretory system as well as in the kidney of the human. Now, the glomerular filtration occurs in the glomerulus of the Bowman capsule. Here, we have given a very fine picture of the nephron. As you see that the nephrons opens with glomerulus, which is included by the Bowman's capsule, and after the Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, which opens into the loop of the Henel's. Loop of Henel's has the two parts, that is the descending limb and ascending limb, and it opens into the distal convoluted tubule, which is known as DCT, and each DCT of nephron opens into the collecting duct, which opens together with many glomerulus into the renal pelvis. So here a nephron, and now the renal tubule beside the Bowman capsule, highly coiled tubular region called proximal convoluted tubule PCT is followed by a hairpin-shaped structure called Henel's loop. The Henel loop is not situated in the cortical region. आपको पूछा जाता है कि कौन सा भाग कॉर्टेक्स रीजन में होता है, कौन सा भाग मेडुला रीजन में होता है, तो आप याद रखेंगे Henel loop, which is the part of the nephron, is not situated in the cortical region, but it is situated in the medulla of the kidney. The Henel loop has descending and ascending limb. The ascending limb of the Henel's loop continues as another highly coiled tubular region, that is the distal convoluted tubule. आपको याद रखना है कि limb of Henel loops continues as the DCT, that is the distal convoluted tubule, which is the part where the concentrated urine is formed. And in the part that is the PCT, proximal convoluted tubule, here the urine is diluted. These two facts is very important for your MCQ type of questions, that the diluted urine is formed in
the PCT, that is the plasmal convoluted tubule, whereas the concentrated urine is formed in the distal convoluted tubule DCT. The DCT of many nephrons opens into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyx. Summary: the Malpighian corpus, glomerulus along with the Bowman's capsule, PCT and DCT are some parts of the nephron which are situated in the cortical region of the kidney, whereas the Hanel's loop is that part of the renal tubule which deep into the medulla. The outer layer of the Bowman capsule is lined by the squamous epithelium, whereas the inner layer has podocytes with the filtration slits. Transition epithelium is present in the ureters, renal pelvis, and urinary bladder. Now, I am going to discuss the formation of the urine. Urine is formed in the three main steps, that is the glomerular filtration, reabsorption, and secretion. Glomerular filtration is followed by the selective reabsorption and tubular secretion. And in my next video, I will discuss the formation of the urine, which is the main part of the human excretory system. And I am going to conclude this video today, and please wait for my next video when we will discuss the formation of the urine. In my next video, we will continue on the next day. Thanks for watching. Good night.